At the next lesson number 8, basic utility in Ubuntu Linux. In the previous chapter, we looked at how we operate the computer with the Ubuntu Linux OS. We will further expand the discuss by looking at some basic utility that Ubuntu provides. It manipulates the directories. Okay, we have looked at calculator application as I mentioned in the earlier Linux. We provide the inbuilt applications and entertainment. We will look as a genuine name, viewer, rhythm box, music player, total music movie player, and image editor. Now, as an introduction of the terminal, we have used pressing the Control plus Fn. Fn means function key. The N is the terminal number which from 1 to 6. Okay, that the N is the terminal number. We use the function 1 to function 6 मतलब F1, F2, F3, F4, F5 or F6. Okay, we have already started the graphical section. We also CLI session running with the GUI program using the genome terminal. It provides the CLI environment of the GUI window. It is provide much more attractive and it allows the terminal for GUI programs. तो देखो यहाँ पे genome टर्मिनल आपको इस तरह से डिफाइन होगा, दिखाई देगा उसका टर्मिनल जो फिगर 8.1 में दिया गया है. तो इसमें बहुत सारे जो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं दे आर फाउंड एज ए डायरेक्टरीज. ओके, तो आपको कहाँ से जाना है एप्लीकेशंस में और एसेसरी दैन टर्मिनल, उसमें आपको क्लिक कर देना है. ओके, क्या कौन सा क्लिक करना है? कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस 3. In the figure 8.2, the terminal being a GUI window can be moved and resize, the minimize and maximize just like a other window. When the entire content of the CLI screen cannot be displayed in the window, it provides the scrollable again just like other graphical programs. One of the major limitation, one of the text mode screen, they can also display the fixed number of the lines of the text. In some commands, it provides more output than it fit the screen. Initial part of the output, simply scroll of the screen is less. The commands that by using the means of the X character, also user has no anticipates that they are more output than the screen has accommodated before running the commands. यहाँ पे आपको देखो टर्मिनल दिया है जो यूज़र का टर्मिनल आफ्टर चेंजिंग द प्रॉपर्टीज. ओके, एलएस मतलब जो जितने भी फाइल्स हैं वो आपको शो करेंगे फ्रॉम द यूज़ ऑफ द ls command. Now, sometimes we want to have more than one terminal open. For example, when we are working in a terminal, you need some use some command you might forgotten how to use. Unix and Linux has an online menu of the earlier days. You may read the manual without disturbing the current session in a second terminal window. The terminal support use each file on tab. Shift Control plus T is the shortcut key. We may switch between the tabs by clicking the tab's title using the mouse or Control plus Alt plus PGUP मतलब page up and page down. DN मतलब page down up. Use the shortcut keys. Now, a tab is used to place the close button using the mouse or a shortcut key. Shift Control plus W is the shortcut key. We may copy the text from the one terminal and paste in another by saving typing. We may even copy the text from some other GUI program like office.org. तो ये एडिट मेन्यू में जाके आप कोई भी प्रोग्राम को ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं बाय शिफ्ट Control plus C, and for the copy and for the paste is shift plus Control plus V for the paste. यहाँ पे देखो
ओपनिंग मल्टीपल विंडो भी आप ओपन कर सकते हो, जैसे विंडोज़ में करते थे वैसे ही आप इसमें भी आप लिनक्स में कर सकते हो। ओपनिंग मल्टीपल विंडोज़, एक से ज़्यादा विंडो को आप ओपन कर सकते हो। मल्टीपल टैब भी यूज़ कर सकते हो। द टर्मिनल हैज़ अ ऑप्शन विद द कीबोर्ड shortcuts and the profile preferences in the edit menu. While the first option is allowed to change the keyboard and shortcut key, the second one is given as a control over the appearance of the terminal as well as some other options like scrolling. यहाँ पे प्रोफाइल विद प्रेफरेंस इन द टर्मिनल्स में कलर्स आप चेंज कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर आपको ब्लैक रखना है तो ब्लैक, बैकग्राउंड कलर आप कोई भी इसमें से पैटर्न में से चॉइस कर सकते हो। बोल्ड कलर भी आप कर सकते हो। When we start the terminal, a new Linux CLI session is started in. Unlike the virtual text mode, with the screen automatically logs terminal using the session name used to log the GUI session. CLI displays the short text known as the prompt. The default by prompt is user at the rate सिस्टम नेम करंट डायरेक्टरी। तो ये जो आपको नाम दिया गया है कि यहाँ पे जिग्नेश एट द रेट जिग्नेश डैश लैपटॉप, वो उसका यूज़र नेम हुआ लिनक्स का। ठीक है, जैसे हम विंडोज़ में अपना नाम लिखते हैं एडमिन या स्टूडेंट या आप खुद का नाम भी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ यूज़र एडमिन। तो वैसे यहाँ पे एडमिन कौन सा है लिनक्स में, जिग्नेश एट द रेट जिग्नेश लैपटॉप $। आफ्टर डिस्प्लेइंग the promote of the CLI waits for the type of the command and the command is press the enter. The command is executed if there is no errors in the command. Actually, which showing the list of the current directory. The command is used as a ls while command shows command shows command shows the no error in the commands with the command execute with the directory in the current directory. The command used where the with the terminates with the spring into action display another promote. But this cycle goes to repeatedly with the repeatedly string action to display numbers. Another promote. But this cycle is goes to repeated until the you will exit and CLI exit command by pressing the control plus D. If some commands is running, you want to stop for certain reason, it will press Ctrl plus C. Is exit command and Ctrl D for the end of the input marker. Now manipulate files and directories. तो देखो मैनिपुलेट मतलब चेंजेस करना, डायरेक्टरी नाम यहाँ पे देखो जिग्नेश का एक ओपन बना है यूज़र नेम का, तो उसके सारे फाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। म्यूजिक, उबंटू 1, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स, etc. The Nautilus file browser, like many other programs under the Linux, it has a menu bar for the toolbar for use to stop the display the icons in the top and a status bar of the बॉटम। मतलब कि जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो आइकन्स दिए हैं, यहाँ पे वन बाय वन क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आइकन्स शो करेंगे। जैसे यहाँ पे जिग्नेश है तो जिग्नेश के कितने आइकन्स यहाँ पे फाइल फोल्डर बने हैं, यहाँ पे जो टोटल आइटम्स है 11 folders है with their different name and with their different icons. One may open as a side of the content pane. It displays the standard location and the bookmark. One may open any of these locations simply clicking on. The standard location include the user home directory. The directory root file system in the display the list of the computer connected with the through the network. It will be used and it will be trash. Trash मतलब अभी इन सब में फोल्डर्स यहाँ पे जो यूजर्स के फोल्डर्स में उसमें आप कोई भी फाइल्स का ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। क्लियर? नाउ ओपनिंग फाइल्स
and folder directory. You may double click a file or folder, you will be open. The file open with a Nautilus window. अभी कोई भी फाइल और फोल्डर को ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक करना है। फोल्डर जब ओपन होता है इट डिस्प्ले द करेंट कंटेंट ऑफ द with the content of the folder. When you double click a file or folder, Ubuntu tries to find out the most appropriate program for opening the launches, and program tells the open file if you cannot find the suitable program in the dialog box. यहाँ पे देखो विद नॉट बी डिस्प्ले द यूजर शेड्स एंड द ब्लूटूथ ऑथराइजेशन कि ओपन जो हम कर सकते हैं कभी कभी हम ओपन नहीं कर सकते विद द गिवन परमिशन एंड एसोसिएट कैन नॉट बी सेट विद द एसोसिएट प्रोग्राम्स। यहाँ पे देखो कोई भी फाइल को ओपन करना है विद ऑथराइजेशन डायलॉग बॉक्स। ऑथराइजेशन मतलब आप यूज़र है तो उसके हिसाब से आप ओपन कर सकते हो। Among the common files and text files, Open Energy Editor with the Open ORG files open with the respective Open application, the image files and the Open GNLs, the applications of the music files, Rhythm Box Music Player and video files with Open with the Tito Music Player. We shall discuss these programs in the comment sections. Once the multiple folders are open with the back button in the previous file browser, it will be open with current open button and with the go back with the down button. ओके तो देखो इसके अंदर भी हम डायरेक्टरी जो भी हम ओपन करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे चाइल्ड डायरेक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट व्यूइंग नॉटलेस भी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।